Question is, derive an expression for the force acting on a current carrying straight conductor kept in magnetic field. State the rule which is used to find the direction of this force. Give the condition under which the force is maximum and the condition under which the force is minimum. So this is the problem which is based on the topic, the current carrying wire placed in an external field, the force on a current carrying wire placed in external magnetic field. So to derive the expression for the force acting on the section of the wire, we use the key things. For example, we take small n. We take small n be the number of density of mobile charge carriers. Number of density means the number of charge carrier per unit volume. Let the number of charge carriers per unit volume be small n. We take the section L of length L of this wire, and the area of cross section is uniform. Let us assume it to be uniform as A. Then we can say that in this particular volume, volume is area multiplied by length AL. In this volume AL, the total number of charge carriers is given by small n multiplied by A multiplied by L. I repeat this thing. Small n is the charge density. It means that the number of charge carrier per unit volume. The volume of a section taken here is the length multiplied by area. So the total number of charge carriers given by small n multiplied by L into A. So NLA is the total number of charge carriers, and let the charge on each carrier is the charge of electron. Then we can say that the the total charge is NLA into E. Or if suppose on any other charge, suppose it is Q, then we can say that the charge of the total charge in this volume is NLA into Q. So this is the total charge. Now we know this particular formula, the formula for force acting on a charge moving in a magnetic field with a velocity v. It is F equals to QV cross B. Now here in this place of Q, there is not a single charge. There are many number of charges, and we have discussed it that the total number of charges are n into L into A, and we multiply this by the single charge which is equal to Q. So this is the total charge. So we have to put this expression NLAQ instead of this Q in our expression. So we have put this thing in this expression NLAQ and V cross B. Now here V is the drift velocity, Vd is the drift velocity of the charge carrier. So this becomes NLAQ Vd cross B. Now this thing J equals to any Vd. Now we use this formula J equals to any Vd or NQVD here, and NQVD, in place of this we put the value of J, which is the current density J. Now the expression becomes JAL cross B. We take the vector on L because we take this particular section of the wire as an element having a vector. So this is JAL cross B. Now J into A is nothing but the current. The current density multiplied by the cross section area is the current. So the current multiplied by L cross B. So we can say that the force is IL cross B. This is the value of the force. Now this force is maximum. This force is maximum when the angle between L and B is theta equals to 90 degrees. So when theta equals to 90 degrees, sine theta is 1. So in the maximum condition, this is ILB. This is the maximum possible force. This is the maximum possible force. Now it is minimum when the value of theta is equal to 270 degrees. So when theta equals to 270 degrees, sine 270 is minus 1, and we can say that it is F equals to minus ILB. This is the negative value which you obtain. Or we can also say that at angle of 0, when the angle is 0, it becomes 0. Angle is 0, this becomes 0. But the minimum value is at theta equals to 270 degrees, which is
minus ILB because sine 270 is -1. So the maximum value is ILB and the minimum value is minus ILB. So this is the answer of the first part of the problem. In the second part, we have to find out the condition. We have to find out the rule, basically, state the rule which is used to find the direction of this force. So the Fleming's left hand rule is used to find the direction of this force. The Fleming left hand rule states that if we take our left hand, then this particular forefinger denotes the direction of magnetic field. This particular middle finger denotes the direction of the current. Then the direction of the thumb denotes the direction of the force, and all these three are mutually perpendicular. So this is the rule which we use to calculate the direction of the force, because if we know the magnetic field direction and we know the current direction, then we can calculate the force direction. In this case, for example, we have used the cross sign. It means that the magnetic field is going inwards into the plane of the board. So this is the direction of B. So this is the direction of B, and this finger denotes the direction of current. Suppose this is the direction of current from left to right, then the force acting on this wire is denoted by this thumb, which is in the upward direction. So this particular section of the wire feels a force in the upward direction, which is perpendicular to both the magnetic field direction as well as the current direction. So this is the rule to find out the direction of force. So इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फोर्स का किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला। तो उसके लिए हम, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ द वायर शो करेंगे एल लेंथ का और ए क्रॉस सेक्शन एरिया का। यहाँ पे स्मॉल एन हम मान लेते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर की डेंसिटी को। तो उस केस में इस एल सेक्शन के वायर के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे n इंटू एल इंटू ए के बराबर। और हर एक चार्ज कैरियर का चार्ज है q, तो टोटल चार्जेस का जो कंबाइंड चार्ज होगा वो होगा n l a इंटू q। दिस इज द टोटल चार्ज। फिर उसके बाद हमने जो इक्वेशन इससे पहले जो पढ़ी होती है, लॉरेंट्ज फोर्स का एक पार्ट जो होता है, लॉरेंट्ज फोर्स जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो वहां पे इस इक्वेशन में Q के प्लेस पे हम एन एल ए क्यू पुट कर देंगे और यहाँ से जो है फिर हम कुछ सर्टेन इक्वेशंस और यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एन क्यू वी डी, दिस इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी which we have studied in earlier chapters. So this is n equals j equals to n e v d और n q v d। तो इसकी जगह j हमने पुट कर दिया। j इंटू ए इज नथिंग बट करंट, करंट के प्लेस पे पुट कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि L जो है हमारा यहाँ पे, उसको हमने लास्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखा है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया है B के साथ। और उसमें हमें इसका ऑर्डर भी ध्यान रखना है, L पहले लिखा जाना है, B बाद में लिखा जाना है। सो फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आता है I L क्रॉस B। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि दैट द मैक्सिमम फोर्स इज व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो उस कंडीशन में फोर्स हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। और अगर मिनिमम की हम बात करें तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं तब उस केस में, और नेगेटिव को मिनिमम मान के चलते हैं, तब उस केस में साइन 270 डिग्री पे नेगेटिव आई एल क्रॉस बी होगा। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो हमें एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 पे मिनिमम मैग्नीट्यूड वाइज आंसर मिलेगा। अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर ना करें तो वो वैल्यू हमें मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो उस कंडीशन में फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ये चीज कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो मिनिमम होगा। अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम बात करें, अगर उसको कंसीडर हम करते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। और साथ के साथ अगर हम नेगेटिव वैल्यू फोर्स की ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं, तब उस कंडीशन में थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री पे हमें रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। अगर हम इसका लॉजिकली आंसर देखें तो आंसर इसका थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे रहेगा। So hope you understand the solution. Thank you.